So till our previous session, we were talking about the concepts related to the importance of the SSI, the small scale industry. We discussed the different formats in that, different things into that why we need the small scale industry. Today, our discussion will be majorly focused on what are the advantages of having the small scale industries, because everyone is trying to focus, everyone is trying to say that the small scale industry is required. Now, what is the advantage of having the small scale industry? We discussed it in detail on the other day, that yes, the small scale industry is required. Now, what is the advantage? How will this small scale industry benefit the society, the country, the kind of economy? These all things is what we have to talk about. In fact, friends, we have to talk from the broader perspective. We cannot talk about this particular concept in the kind of narrower way. We have to discuss a lot of things in that. And the very first in that, if you check out, is the creation of employment. On the other day, which the examples which I was giving you with reference to those slippers, जब हमने Skechers और Wildcraft के भी slippers होते हैं ये जाना था. So at that time we understood that these small scale industries at the multiple places are having multiple of the units, small units. And on the other day itself, we understood that they are having at least say 5 to 7 people at one industry. If 5, 7, 10 people are occupied at one industry, that means at 10 different places, you'll be occupying 50 different employees. And by that way, you are creating more and more and the larger level of employment. And that's why it is said that the small scale industry creates the large scale employment. The employment at a very large level is created by them. Just observe it. India is a labor abundant country. We know about this very well. In fact, in the current scenario, if you observe, if you look at the statistics, they say that 65% of the Indian population is the working population. This composition earlier was 50%. Means what? That बच्चे और बूढ़े इनको छोड़ के the people who are actually able to actually eligible to work, those are to the tune of 65% of our population. 130 करोड़ and growing जनता हमारी. We are having the population of 130 crore and growing day by day, isn't it? And against that 65% if is working, that means we are having the working population of approximately 85 crore. And if 85 crore janta can work, we have to give the work to them. अगर फैक्टफुली देखा जाए तो इस 85 करोड़ में से ऑक्यूपेंसी ये सिर्फ 40 से 45 करोड़ लोगों तक के है. Still we are having the unemployment to the tune of approximately 50%. जो हमारे पास ये unemployment का data आता है ना, that how much of the population is unemployed, that is not with reference to the total population, that is with reference to the working population of our country, and that's huge. So ये जो small scale industries हैं, ये इस gap को fill करने के लिए बहुत मदद करती है. And that's why it is said that as we are the labor abundant country, we need the kind of organizations which will be labor intensive and not the capital intensive. अगर आप मशीन से चलने वाली फैक्ट्रीज चालू कर दोगे जिसमें ऑटोमेटिक सारे काम होते रहेंगे, तो आपके पास लेबर की आवश्यकता कम हो जाएगी. और अगर लेबर की आवश्यकता कम होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग द मोर अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग क्रिएटेड और नॉट. If you want to avoid that unemployment, for that purpose, what you need is, you need the small scale industries, and that's where these people are helping you. Because we have understood that the small scale industry are the labor intensive industry. क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि ये बड़ी बड़ी मशीन आके इंस्टॉल कर दें, इनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल दें. तो छोटे सेटअप में जितना ज्यादा काम कर पाए वो करने की कोशिश करते हैं, तो दे क्रिएट द लेबर.
they create the employment for these unemployed labor. That's what he said, that small scale industries have potential to create employment opportunities on mass scale. जो मैंने कहा that small scale industry create the large scale employment because they are scattered, they are located at multiple of the places, almost everywhere they are located, and that's why they are creating the large scale employment. They are labor intensive, they use more labor than other factors of production. Other factors of production here would be machine. Where if you would look at the factors of production, those are the factors of production are man, material, machine, and money. Now, out of this, if you are requiring lesser machinery, that means you will be requiring lesser money. And when you are working with more of the labor, that means your other factors of production are getting saved or not. So they are not only creating the employment in the country, but they are also saving the money, saving the capital for the owner of that small scale industry. So important words, if you would pick up from this particular paragraph, it's labor abundant country we are. Then the industries have the potential to create employment opportunities on mass scale. Then these are labor intensive. We have already understood this. We have already been discussing about this point again and again, that the SSIs, the small scale industries, are always the labor intensive units, and they require more labor, so less other product. They use lesser of the other factors of production. Their gestation period is low and can provide employment opportunities to large number of people. Now, what is this gestation period? Low gestation period means from the point of setup to the point of actual commercial production. The time that is required is called as gestation period. From the point, right down there, gestation period means the period from Soham बेटा मैंने अगर तेरे को एनोटेट करना चालू किया ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा. हाँ, gestation period means the period from starting a unit to the start of actual commercial production. To the start of actual commercial production. All right. So that is what you call as the gestation period. Now understand a point. अगर मुझे एक लार्ज स्केल यूनिट बनाना है, लाइक बजाज ऑटो को अगर एक नया यूनिट डेवलप करना है, एक नया यूनिट सेटअप करना है, तो व्हाट बजाज ऑटो विल बी रिक्वायरिंग? बजाज ऑटो विल बी रिक्वायरिंग अ लार्ज फैक्ट्री शेप. बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड लगेगा पहले उनको. उस प्लॉट ऑफ लैंड पे फिर वो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे. वो कंस्ट्रक्शन भी एकदम सोफिस्टिकेटेड होगा बिकॉज दे वांट द बजाज ऑटो बीइंग देयर. उसके बाद आपको वहां पे मशीनरी, मतलब उनकी पूरी असेंबली लाइन सेट करनी पड़ेगी. So if you are doing these all things, then in that case it will surely be taking more time or not. आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, जिस चीज को जितना समय लगना है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना. Which means what? If you are doing the large scale industry development, the gestation, the point of starting to the actual production, that will be large.
लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, टाटा नैनो जब बनानी थी, जब रतन भाई टाटा ने अनाउंस किया था दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ कार ऑफ ₹1,00,000, ये अनाउंसमेंट विम्सिकल अनाउंसमेंट था, बट वो एकदम इमोशन में आके बेचारे ने अनाउंस कर दिया। वो उस चक्कर में टाटा मोटर्स के लगभग लगभग 20 से 25 टॉप एग्जीक्यूटिव छोड़ के चले गए थे कि आप ऐसे कैसे अनाउंसमेंट करके आ गए कि हम लोग टाटा नैनो लाएंगे या कोई गाड़ी लाएंगे 1,00,000 रुपए में, जो पॉसिबल ही नहीं है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, दे एक्चुअली यूज्ड इट टू देयर एडवांटेज। व्हाट दे डिड, टाटा मोटर्स ने अपने सप्लायर्स को बुलाया, उनके जितने भी एंसिलरीज थे उनको बुलाया एक एक करके, एंड दे स्टार्टेड डूइंग द नेगोशिएशंस विद देम कि रतन भाई ने अनाउंसमेंट किया है दैट वी हैव टू ब्रिंग अ टाटा नैनो, वी हैव टू ब्रिंग अ व्हीकल ऑफ 1,00,000 रुपीज। अब अगर 1,00,000 की गाड़ी लानी है तो उसके लिए हमें खर्च भी कम करना पड़ेगा। वी वांट द पार्ट्स विद द चीपर कॉस्ट बट विद द बेटर क्वालिटी। तो जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट करना चालू किया तो दे स्टार्टेड गेटिंग द नेगोशिएशंस डन फ्रॉम द सप्लायर, और निगोशिएशन करते करते उनको पता चला कि ये सारे प्रोडक्ट सस्ते भी बनते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके जो नॉर्मल गाड़ियां थी, उनकी जो नॉर्मल व्हीकल्स था, उसके लिए भी इन्होंने स्पेयर पार्ट्स का रीनिगोशिएशन कर लिया। मतलब टाटा नैनो के लिए तो सस्ते पार्ट्स खरीदे ही खरीदे, प्लस जो उनकी नॉर्मल गाड़ियां बन रही थी जिसके लिए वो वही प्रोडक्ट महंगे कॉस्ट में खरीद रहे थे, अब उसी का कॉस्ट कम करवा लिया उन्होंने। दैट्स हाउ दे यूज्ड इट टू देयर एडवांटेज। नाउ टाटा नैनो जब बनानी थी तो दे हैड सेट अप अ प्लांट इन सिंगूर, वेस्ट बंगाल, जहां ममता दीदी थी। ममता दीदी पता है आपको? ममता दीदी हमारे देश की 3 लेडीज हैं जिन्होंने हमारे पास्ट प्राइम मिनिस्टर को बहुत परेशान किया था। हमारे जो पास्ट प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, उनको उन्होंने बहुत परेशान किया था। बेचारे नाम उनका मनमोहन सिंह, बट उनको कहते ही मनमोहन सिंह थे, बेचारे कभी बात ही नहीं कर पाए। एंड दिस पर्सन was irritated by 3 ladies, 3 देवियां हमारे देश की। एक ममता दीदी, दूसरी अम्मा साउथ में थी, अभी रेस्ट इन पीस, जयललिता, यस साथेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड थर्ड वाज बहन जी, दीदी अम्मा और बहन जी, मायावती। सोनिया जी तो चौथी थी। These 3 were the ladies who troubled him like anything. Well, anyways, अब ममता दीदी ने डिसाइड किया कि वेस्ट बंगाल में टाटा का प्लांट नहीं बनेगा। एंड राहुल, आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। एंड इस वजह से टाटा मोटर्स का 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, 10,000 करोड़ रुपीस, बिकॉज दे मूव्ड देयर प्लांट फ्रॉम सिंगूर इन वेस्ट बंगाल टू आनंद इन गुजरात। उनको सिर्फ ये प्लांट चेंज करने, जगह चेंज करने में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बिकॉज दे हैड सेट अप द होल ऑफ द प्लांट, दे हैड सेट अप द होल ऑफ द मशीनरी only because of the labor unrest and the political unrest. That's why they say that you cannot take political people for granted when it comes to your business. Your business do get affected. In fact, तुम्हारे पास जब तुम 12th में आ जाओगे तो you have got this as a syllabus, business environment नाम का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, OCM सब्जेक्ट नहीं। In that business environment we talk about these all things. So the point is what, the highlighting point here is what, कि वहां टाटा मोटर्स ने सेटअप करने से टाटा नैनो लाने तक लगभग लगभग 3.5 साल ले लिए। अनाउंसमेंट करने से एक्चुअल टाटा नैनो आने तक 3.5 साल लग गए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ 100 गाड़ियां इन्होंने 1,00,000 में बेची। करंटली टाटा नैनो इज अवेलेबल इन द कॉस्ट ऑफ अराउंड 2.5 to 3 लाख रुपीस। क्यों? तो हमारी टाटा नैनो ऑटोमेटिक है, उसमें एसी है, ऐसा है वैसा है, कर करके इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए में टाटा नैनो होगी। जब शुरुआत में टाटा नैनो आ रही थी उस समय, यस, द कम्युनिस्ट हैड अपोज्ड दैट। उस समय पे जो टाटा नैनो आ रही थी, उस समय की टाटा नैनो एक्चुअली अगर आ जाती तो आज तुमको रास्ते पे रिक्शा से ज्यादा टाटा नैनो दिखती। दैट वुड हैव बीन द काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि आज हमारी जो रिक्शा है वो भी लगभग लगभग 1.25 लाख रुपए में आती है।
और हम लोग कंफर्ट के साथ 4 सीट बैठ के मस्त घूम रहे हैं कार में. जस्ट इमेजिन दैट इज अ सिचुएशन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ. Well, any which ways. So that was a large scale, and that's why the gestation was huge. From the point of announcement to the actual coming the cars, 3.5 years. But वही अगर छोटा बंदा कोई डिसाइड करे कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, he decides, he brings the material and he does the accumulation himself, he does the assembly himself. He is not dependent on the machinery, he is not dependent on large number of labor, and that's why he can bring the product faster in the market. That's why he can start the commercial production very fast, and that is why it is said that they are having the lesser gestation period as compared to the large scale industry. All right. राहुल ने क्वेश्चन पूछा, बट सर इन दिस केस जब उन्होंने रीनिगोशिएशन किया था प्राइस का, टाटा मोटर्स का एग्जांपल, तो इन दैट केस द टाटा कार्स का क्वालिटी लेवल कम होगा. कौन सा अच्छा था भाई? एक टाटा मोटर्स की कौन सी गाड़ी का क्वालिटी पहले से अच्छा आ रहा था? नाउ द व्हीकल्स व्हिच आर कमिंग, द न्यू व्हीकल्स दैट दे आर ब्रिंगिंग इन, they are having the better quality because now they have got the research team of Jaguar Land Rover with them, and that's why their quality is improving like anything. But in the earlier scenario, the quality was not that good. जब टाटा इंडिका आया करती थी, तो कई बार तो गाड़ी शोरूम में आ जाती थी, तब पता चलता था कि इसका व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग किया ही नहीं है. कहां से? फैक्ट्री से. और उस पर टेस्टेड होके का स्टिकर चिपक के आता था. ये हमारे एक मित्र थे, हमारे एक्चुअली मेरे सर के क्लाइंट, जिन्होंने मुझे बताया, दे वर द डीलर फॉर टाटा मोटर्स एंड दे वर हैविंग दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. वेल, ऑल सेड एंड डन, quality doesn't get depleted. They were focusing on the same quality with the negotiated price, and that's why the quality was not getting depleted. All right, Rahul, I believe that you have got the answer. Making our country develop, we need capital intensive. Yes, of course, Sanskruti, there is no doubt about it. If you want to grow faster, if you want to grow big, you need to bring the machine intensive, capital intensive industries. But at the same time, if you look at it, Sanskruti, we are having a kind of imbalance. अगर तुम सारे के सारे कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स की बात करोगे, तो यू विल बी नीडिंग मोर प्लेसेस, यू विल बी नीडिंग लार्जर प्लेसेस, एंड ऑल दीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विल बी इंटरेस्टेड टू गो ओनली एट द डेवलप्ड प्लेसेस. क्यों एक इंडस्ट्री लोकल लेवल पे आके काम करना नहीं चाहती है? If you would ask Bajaj Auto to set up a plant in say Nagpur, they won't do it. Why? Because Bajaj Auto says, what, I'm already having a good setup in Pune, I'm already having a good setup in Aurangabad, so why should I do it in Nagpur again? वो वहां पे मतलब वो रीजनल इंबैलेंस हो गया था. पर वही अगर कोई नया व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आता है, they can think of any and every kind of place or not. And that's why you need the small scale industries also. बिकॉज आपके पास लेबर भी बहुत अवेलेबल है, तो उसको भी फुल्ली यूटिलाइज करके अगर आपको काम करना होगा, तो यू नीड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एम आई क्लियर, संस्कृति? यस. The next one, the next advantage is that it is requiring lesser capital. We have been seeing this again and again. You need lesser capital means what? Because you are requiring lesser machinery, you are requiring lesser space for the business. So accordingly, when you are requiring lesser space, you are requiring lesser machinery, so automatically you will be requiring lesser money as well. We discussed this point in the previous point also, that the other factors of production required will be lesser. So even the money, even the capital required for the small scale industries get reduced. The SSI requires lesser capital as compared to the large scale industries. क्योंकि मैंने कहा large scale industry ये capital मतलब वो मशीन का assembly line. अब जैसा बजाज पल्सर का मुझे जहां तक पता है, they say that Bajaj Pulsar get assembled in 40 seconds. 40 seconds, one Bajaj Pulsar get assembled. So in a day, if they want, they can produce 10,000 Bajaj Pulsar. 10,000 in a shift of 2 times, they can set up, they can create to 10,000 vehicles. If they are having that kind of production capacity, that means they'll be requiring that kind of money as well. क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को आप कहोगे कि आपने 10,000 बनाने हैं, तो 10,000 व्हीकल्स बनाने के लिए आपको 20,000 लोग लगने वाले हैं. But
if you want lesser capital, so if you have lesser capital, you will be producing less goods, then in that case you will be requiring lesser money as well. So small scale industry, that's why I said that is requiring lesser capital as well. The SSI can be started by and run by small entrepreneurs with a limited capital resources. There are so many such schemes available in the market जहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल मतलब क्या कि किसी, अब सिंपल सा एग्जांपल, कौन सी पैडमैन पिक्चर आई थी देखो. In that Padman movie, what he did, he had developed a machine on his own wherein he would be producing those sanitary pads at 60,000 का machine. क्यों? तो वहां पे काम करने के लिए अलग अलग लोग दिखाए गए थे कि एक काम करने के लिए एक बंदा, दूसरा काम करने के लिए दूसरा बंदा, तीसरा काम करने के लिए तीसरा बंदा. बट आजकल की अगर सोफिस्टिकेटेड कंपनीज का अगर आप एग्जांपल लोगे तो दे आर नॉट डूइंग लाइक दैट. The large scale industries, they are just putting the raw material and they are getting the end product from the outer machine. So that's where the difference comes कि वो क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको पैसा भी बहुत कम लग रहा है. Their capital requirement is also lesser. Then utilization of domestic resources. I would generally not depend on the imported products. मैं बहुत ज्यादा sophistication करने के पीछे नहीं पड़ूंगा. मेरे पास जो कल on the other day when I was discussing, I had given you the example of that broom. वो लोगों ने क्या किया था, broom manufacturing units ये ज्यादा से ज्यादा आपको कोंकण एरिया में क्यों दिखते हैं? Because they are having huge amount of coconut plants available there. They can just remove the coconut tree ka leaves and they can make the brooms out of that. So why they are into that area is because they are having the domestic resources available. Domestic resources means locally made. Be vocal for local. And that's what they have been doing. I hope my voice is coming good for everyone. Okay. Sanskruti, you are able to hear now? There must be some lag in between. Okay, no problem. Yes. So SSI make use of local resources which are available in the greater extent. Small amount of savings which normally remains idle are now channelized. How those are channelized? They are using the local funds जो उनके नियर बाय, उनके जो काइंड ऑफ रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं, उन्हीं से वो फंड सोर्स करते हैं और वही फंड्स वो अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस करने की कोशिश करते हैं. So those local funds are also getting channelized. The domestically available, the locally made, locally available goods, they are utilizing that, and by that way the local goods are also getting processed. This will increase the capital formation and investment in the economy. कैसे? Just imagine that situation. ये point बहुत बड़ा interesting point है, बहुत जबरदस्त point है. क्यों? If I am located in a small place, there people normally have the kind of habit of saving the money and keeping that in the cash form. They don't keep it in the bank, they don't keep it in the mutual funds, they don't do the fixed deposits of that. They generally like to keep it in cash. क्यों? तो safety and security, you know. अब अगर, और दूसरा क्या, वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं है. अब सपोज आप बड़ी सिटी में जब चले जाते हो, if you go to the place like पुणे, if you go to places like मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां पे इमीडिएटली आपको बताने वाले बहुत सारे लोग आते रहते हैं कि you have got the opportunities available. You can start this unit, you can start that unit, और वहां पे चैनलाइजेशन, प्रोसेसिंग ऑफ फंड्स फास्ट होता है. अब जब डोमेस्टिक लेवल पे ये काम चालू हो जाएगा, जब लोकल लेवल पे, जब रीजनल लेवल पे ये काम चालू हो जाएगा, तो रीजनल लेवल का पैसा जब बिजनेस पे इन्वेस्ट होना चालू हो जाएगा, तो बिजनेस विल प्रोड्यूस समथिंग एंड विल मेक द मनी आउट ऑफ दैट. तो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन ऑफ फंड्स विल स्टार्ट और नॉट, व्हिच वाज नॉट हैपनिंग till the time the SSI was not a concept. But now because of SSI, he requires lesser capital. He goes to the local kind of lender. He takes the money from that lender who was keeping that in cash. Now that cash has been invested into the business and that business is making the money, and that business is supporting the overall economy of the country or not. So by that way, our overall economy is also supported, wherein the funds are getting circulated.
क्योंकि अगर आपके फंड्स कैश फॉर्म में अटक गए, वन, यू आर रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर ऑफ दैट. Two, you are trying to create a kind of atmosphere wherein your funds are not supporting the economy as well. So whenever you are having the surplus funds, it is always expected that you should put that into the investments. Because when it will go into the investment, maybe in the form of fixed deposit, maybe in the form of savings deposit, maybe in the form of mutual funds, maybe in the form of equity investment, whichsoever investment, maybe in the form of any business investment, that will come in circulation, and that's what is required. क्योंकि अगर आपका फंड सर्कुलेशन रुका तो आपका बिजनेस, आपका इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी रुकेगा. Am I clear for everyone? Okay. Increases the industrial output. How come it will increase the industrial output? The industrial output means the total production from the various factories. That's what we call as industrial output. The industrial output will grow. अगर आप मशीनरी की बात कर रहे हो, अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी के साथ साथ ये प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी. I told you that even the unit which is supporting the large scale industry can also be SSIs. Like मैंने बजाज ऑटो का एग्जांपल बताया था, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी, they are not producing every product on their own. Even the Volkswagen kind of company doesn't produce their headlights, they do not produce their mats, they do not have the time for that. Volkswagen क्या बोलता है, मैं वो प्लास्टिक मैट पता नहीं बनाने के चक्कर में क्यों पड़ूं. Volkswagen outsources that plastic mat production to a company outside them. तो उससे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वो प्लास्टिक मैट बना रही है, वो उसको बिजनेस मिलना चालू हो गया है नहीं. So what is happening? They are trying to increase. अब वही यूनिट अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ऐसे प्रोडक्शन करके दे रहा है तो उनके भी बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है. And at the same time, they are producing the products on their own, so they are getting support to the economy only also or not. So that's why it is said that the small scale industry does not only increase the production of their own, they produce or they increase the production for the economy as such. SSI produce consumer goods as well as industrial components. Consumer goods means what? The goods those are being used by you and me. That is called as consumer goods. जो हम लोग एंड प्रोडक्ट में यूज करते हैं. कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो SSIs बनाते हैं. Like especially in the textile industry, the garment manufacturing is majorly done by the small scale industry. And those are what we call as the consumer goods. और वहीं किसी कंपनी को अगर कोई मशीन के लिए सेटअप चाहिए, अब मेरा एक फैब्रिकेशन वाला बंदा है, that fabrication wala fellow I'm sorry, that fabrication wala fellow does the manufacturing of the kind of frames for the large machineries as well. जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती हैं, उन मशीनरीज को जो कास्टिंग लगती है, जो फ्रेम लगती है, वो बनाने वाला बंदा भी वही है. मतलब मुझे लगने वाला प्रोडक्ट भी वो बना के देता है. और वहीं किसी इंडस्ट्री को, किसी बड़े बिजनेस को कोई चीज लगती है तो वो भी वो बंदा बना के देता है. And that's why it is said that the small scale industries can produce the goods for consumer as well as industries. So the goods are cheaper and satisfy the needs of poor sections of the society. Products produced by SSI form a significant portion of industrial output of the economy, and that's the fact. Even today, if you just check out, just observe it, SSI output. SSI output percentage. %72% of, now just observe this. I'm just presenting it.
साइज ऑफ द सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, एमएसएमई जिसे हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज द सिचुएशन. It is estimated that total SSI sector comprises of 1 crore 5 lakh 21,190 units. 1 crore units. अगर एक बंदा सिर्फ 20 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ऑन एन एवरेज, that means SSI sector is giving the employment to 20 crore people. And these are the data. I'm not just making any kind of statement. This is the data available on the official website of MSME. Spreading over the length and breadth of the country, about 55% of these units were located in rural India. That means they are restricting the migration as well. जो हमने कल बात की थी. On the other day we had discussed. Why under the importance of the SSI? Because of this, they are restricting the migration. 55% of the total MSME is located in small scale industry. Yeah, so in the rural India. Over 44 lakh in the total SSI sector, where SSIs are, and the remaining 61 were SSSBEs, that is small scale sector business enterprises. वो जो micro and small की बात कर रहे हैं हम लोग. मीडियम एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. तो जो 44 लाख हैं वो अप्रोक्सीमेटली मीडियम एंटरप्राइजेस में जाती है. द नंबर ऑफ एंसिलरी यूनिट्स अमंग एमएसएसआई वर 2.98%. एंसिलरी जो मैं आपको बता रहा था, एंसिलरीज मींस व्हाट? द कंपनीज, द फैक्ट्रीज व्हिच आर सपोर्टिंग द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दोस आर कॉल्ड एज एंसिलरीज. तो टोटल में से सिर्फ 3% ही एंसिलरीज है इंडस्ट्रियल, जो कंपनीज के साथ में, बड़ी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है. बाकी सारी खुद के लेवल पे, खुद के बलबूते पे प्रोडक्शन कर रही है. ऑलराइट. The dominating presence of tiny units with original investment in plant and machinery up to 25 lakh has been continuous feature in SSI. The third census, it was found that 99.5% of SSIs were tiny units, जो startup होते हैं. Basic startups is what they term as tiny units, the units which are requiring the least of the capital investment. In terms of state-wise spread, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra, Madhya Pradesh, in fact Maharashtra used to be on the higher list earlier, but in last some years Uttar Pradesh and Gujarat has taken over in the industrial sector. Are the top 5 states having total share of 47.22%. Even in the current scenario, Maharashtra is 7.64%. It's huge out of the total SSIs. Nature of activities they carry out, about 44% of the units were in the services sector, followed by 40% units engaged in manufacturing and allied activities, and 16% units in repairing and maintenance activities. Hence, service sector emerged as the dominant component. Service sector मतलब क्या? They are giving the support in the sense they are providing consultancies, they are providing the kind of setups कि हम आपको setup करके देते हैं. Those are into the service sector, small scale industries into the service industry. So this is how it works. Yes, of course, SSI has become the second largest sector after agriculture, Satish. So this is in fact this is all taken from the MSME website. तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि एसएसआई का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है. Am I right? Let's come back. Then it contributes to the export. आज की तारीख में इतने सारे एसएसआईज हैं जो those who are not located on the domestic consumption. We have, yes, of course, small scale is the backbone for the large scale. क्योंकि हर जगह लार्ज स्केल आपको सपोर्ट करके दे पाएगा ये जरूरी नहीं है. लार्ज स्केल अपने लेवल का कॉस्टिंग जोड़ता है, भले उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है बट देयर प्रॉफिट परसेंटेज इज मोर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन सम केसेस इज हायर but their profit percentage is lesser, and by that way they are able to supply the goods in the export also. If you go to the places like Coimbatore, if you go to the places like Cochin, you will be finding that 80% of their production is exported.
कोयम्बतूर से आधे या 1 घंटे पे एक प्लेस है कॉल्ड एज तिरुपुर. Tirupati is different, Tirupur is different. Tirupur is the first hub for production of knit garments. जो stretchable आपके होजरी जो आप टी-शर्ट्स वगैरह पहनते हो, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हमारे देश में होता है वो तिरुपुर में होता है. There are 3 locations, 4 locations in fact, primarily in our country where the knit garments are produced. One is Tirupur, second is Kolkata, third is Ludhiana, and fourth is Bengaluru. ये 4 जगहों पे सबसे ज्यादा कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है. फिर उसमें से आगे चल के क्या क्या गारमेंट बनेंगे वो सब अलग बात है. तो निट गारमेंट के सबसे बड़े प्रोडक्शन और तिरुपुर से 80% ऑफ प्रोडक्शन गेट्स एक्सपोर्टेड. दैट्स हाउ द सिचुएशन इज. सो दे आर सपोर्टिंग इन एक्सपोर्ट एज वेल. एंड इफ यू गो टू दैट प्लेस यू विल बी फाइंडिंग दैट almost half of the units come under the SSI sector. Because their production capacities are lesser, they are using lesser machinery, वो लोग job work पे काम करवाते हैं, and because of that their cost of production is also lesser. So they nearly 40% of the industrial exports are contributed by SSI. Products such as hojiri, knitwear, gems, jewelry. सूरत में चले जाओ आपको gems jewelry का production मिलेगा. They all are the SSI level setup. Handicraft, coir production, woolen garments, processed food, chemicals and allied products and a large number of engineering goods contribute. Even वो chips and wafers का मैं उस दिन example बता रहा था आपको, जो हैदराबाद में बनते हैं in the Silicon Valley. Those are also done at the small scale level. बहुत large. आप you name a business, they are having the production into the small scale industry, and they're exporting as well. Also, the products produced by SSI are used in manufacturing of products of the large scale industries which are exported. अभी हमने example लिया था ancillary units. Those ancillary units are supporting the large scale units. It contributes directly and indirectly to exports and earn the valuable foreign exchange for our country. In fact, I'll stop by here itself. The next point, that is equitable distribution, we'll be talking about in tomorrow's session. गौतमी को बहुत नींद भी आ रही है वैसे. Tomorrow we'll be talking about at 9:15 we'll be discussing the further one. So tomorrow our session will be at 9:15 and not at 8:15. Saturday tomorrow. All right? Yes. Bye.